Good morning, students. Hello, how are you? I hope you all are fine, safe and healthy at your home and studying hard too. आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, right? So now in today's class we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, the summit within. Okay. So now before we move on to the text, let us see some information regarding the text. Understanding this information will make it easy to understand about the theme on which the chapter is based. कि ये chapter किस चीज के बारे में है, ये हम थोड़ी सी इस information से जज कर पाएंगे. So before you read, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. Now, Major HPS Ahluwalia, he was the member of the first successful Indian expedition. और कहाँ का expedition था ये? To Mount Everest and in the year 1965. Now, it is about the feeling that he has when he stood on the highest point in the world, that is on the peak of the Mount Everest. Now let us hear this story in his own words. उन्हीं के words में ये story है that climbing the summit कि कैसे उन्होंने summit को climb किया and उससे भी ज़्यादा difficult task the summit he climbed within himself. Okay, so now see, of all the now we are beginning with the text. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads thereafter would lead down? Now he says वो emotions जब वो he was standing on the summit of the Everest, on the top of the Everest, वो जो emotions जो उनके अंदर surge हो रहे थे, means the emotions that arose suddenly and intensely within him when he looked at miles of the panorama below us. जैसे कि वो सबसे हाइट पे खड़े थे जब उन्होंने below नीचे की तरफ miles of panorama देखा, miles of an area scene उन्होंने जब देखा, and he says the dominant one I think was humility. सबसे dominant क्या था? The humility. He says कि जो physical self था ना मुझ में, it seemed to say कि thank God it's all over, thank God कि बहुत ही successfully मैंने अपने इस mission को complete किया है, now it's all over. But instead of being jubilant, instead of being very happy because of this success, he says there was a tinge, there was a trace or shade of sadness somewhere. And why was this sadness over there? वो sadness क्यों थी? He says that maybe it was because कि उन्होंने already तो ultimate achieve कर लिया. He has already achieved the ultimate in climbing, that he has reached to the topmost highest peak इन द वर्ल्ड. तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने हाईएस्ट ही अचीव कर लिया है तो इससे हायर तो अब और कुछ बचा ही नहीं है अचीव करने के लिए. अब जो भी रास्ते यहाँ से जाएंगे ना, विल टेक हिम डाउन, विल लीड हिम डाउन. Yes. So now he says there was a tinge of sadness. And why was this sadness over there? वो sadness इसलिए थी because he thought कि उन्होंने ultimate चीज achieve कर ली है and यहाँ से अब जो भी roads जाएंगी ना वो उन्हें नीचे की तरफ lead करेंगे, mean it will take him down. So there was sadness. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to mountains is never the same again. Now he says by climbing the summit of Everest, आप इतने overwhelmed हो जाते हो, इतने overjoyed हो जाते हो, आपके अंदर एक deep sense of joy आता है, and साथ ही साथ एक बहुत thankfulness आती है कि thank God to everything around us, जिन्होंने इतना हमारे ऊपर अपना हम बोलेंगे कि गुड विशेस रखी, या वी आर वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस कि जिन्होंने हमें इस
समिट ऑफ एवरेस्ट को अचीव करने में हमें हेल्प किया। एंड इट इज अ जॉय जो लाइफ टाइम लास्ट करता है। एंड ये एक्सपीरियंस जो है ना, इट चेंजेस यू completely. And it is also said, now he says that a man who has been to the mountains is never the same again. As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about other summit, the summit of mine, no less formidable and no easier to climb. He says, as I look back at life after climbing the Everest, मैं जो है बिल्कुल भी इतना हेल्प नहीं कर पा रहा टू रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट्स, किसी और समिट के बारे में। द समिट ऑफ माइंड जो है इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड इजियर टू क्लाइम। एंड जो है वो भी हम बोलेंगे इज नॉट एट ऑल फॉर्मिडेबल एंड इज नॉट एट ऑल इजियर टू क्लाइम। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion has gone, I began asking myself the question why I had climbed the Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then, what would remain? Would my memories fade slowly away? Now he says that even when getting down from the summit, once एक बार पूरा पूरा जो मेरा फिजिकल एग्जॉशन था, मेजर बोल रहे हैं कि जब वो एग्जॉशन पूरा फिनिश हो गया, देन आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, तो मैंने अपने खुद से कुछ सवाल करने शुरू किए। वो क्या सवाल थे कि मैंने एवरेस्ट क्यों क्लाइंब किया, एंड वाई ये जो समिट पे पहुंचने का ये जो एक एक्ट था ना, इसका मेरे इमेजिनेशन पे इतना होल्ड क्यों है। एंड इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग जो मैंने येस्टरडे किया, एंड विद एवरी पासिंग डे वो और ज्यादा रिमोट होता जाएगा, दूर की चीज होती जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या बचेगा, वुड माई मेमोरीज फेड अवे स्लोली, क्या ये जो मेरी मेमोरीज हैं स्लोली एंड स्लोली इट्स गोइंग टू फेड अवे। ये सारे जो थॉट्स थे ना, इट लेड me to a question myself. Now, what is the question? See, all these thoughts lead me to question myself as to why people climb mountains. And what was the question? All these thoughts in his mind took him to the question that he asked himself, and the question was कि people mountain क्यों climb करते हैं mountains को। It's not easy to answer the question, and it is not at all easy to answer this question. इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था, because it is there, it presents great difficulties. Man takes delight in overcoming the obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical quality is no doubt exhilarating, and it was for me also. Now he says that it is not at all easy to answer this question, because the simplest answer जो होगा इस question का क्या है, as others have said, जैसा कहा है, because it is there, हम इसलिए climb करते हैं क्योंकि climb करने के लिए mountain है। जब mountain है हमारे सामने पास में, हमें पता है इसको हम climb कर सकते हैं, एक mountain है तो हम climb कर लेते हैं, simple। but बोलना बहुत इजी है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। एक मैन को बहुत डिलाइट मिलता है, बहुत खुशी मिलती है इन ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करके। एंड ऑब्स्टैकल्स जो क्लाइंबिंग में आते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते समय बहुत फिजिकल ऑब्स्टैकल्स आते हैं, उसमें आपको पावर चाहिए होती है, आपको एनर्जी चाहिए होती है। क्लाइंब टू अ समिट का मतलब होता है एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। आपके पास फुल पावर होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके पास एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास में विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप एक समिट को क्लाइंब कर सकते हो। द डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है इन फिजिकल क्वालिटीज का इज नो डाउट वेरी एक्साइटिंग। आप जब इन फिजिकल क्वालिटीज को जब डेमोन्स्ट्रेट करते हो, जब इन्हें आप यूज करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जो कि उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी ये उतना ही एक्साइटिंग था। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from the mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a mean of communion with God. Now he says कि मेरे पास तो इससे भी ज़्यादा एक पर्सनल आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या है? फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं माउंटेन्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुआ हूँ बचपन से, एंड आई हैड बीन मिजरेबल,
लॉस्ट व्हेन, जब मैं माउंटेन से दूर होता था ना, इन द प्लेन्स, तो जो मेरा जो दिमाग होता था ना वो बहुत मिजरेबल कंडीशन में होता था, बहुत लॉस्ट अप होता था. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट एंड ही फील्स दैट नेचर के बेस्ट पार्ट क्या है, माउंटेन्स. देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी, उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो एक ग्रेटनेस, ग्लोरी जो है, इट पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मेनी, बहुतों की तरह आई ऑल्सो बिलीव दैट माउंटेन्स जो है आर अ मीन ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि वो एक ऐसा स्टेट होता है या फीलिंग होती है जिसमें आप ऐसा फील करते हो दैट यू आर इन अ क्लोज रिलेशनशिप विद हु, विद गॉड. कि आप इतनी हाइट पे होते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि आप गॉड के बहुत क्लोज हो. ओके, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स. अब एक बार ये चीज जब ग्रांट हो गई तो क्वेश्चन क्या बचता है, व्हाई एवरेस्ट. की ठीक है माउंटेन ही तो क्लाइंब करना है, देन व्हाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. बिकॉज एवरेस्ट इसलिए क्योंकि एवरेस्ट हाईएस्ट है, एवरेस्ट माइटिएस्ट है, एंड इसी ने ही डिफाई किए हैं बहुत से प्रीवियस अटेम्प्ट्स, दैट इज frustrated and resisted many previous attempts. So it takes the last ounce of one's energy, और हमारी एनर्जी का एक लास्ट आउंस जो बचता है ना, वो भी इस क्लाइंबिंग में. ये समिट अगर हमें सक्सेसफुली इसको रीच करना है एट द टॉप, तो हमारी एनर्जी का एक जो लास्ट, हम बोलेंगे ना आउंस, जो एक यूनिट होता है एनर्जी कैलकुलेशन का, वो लास्ट आउंस भी ये हमारा ले लेता है. इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. ये एक ब्रूटल स्ट्रगल होता है रॉक एंड आइस बोथ, दोनों के साथ. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when life is at stake. और once taken up, आपने अगर halfway ले लिया ना, then you can't give it up. आप उसको वापस नहीं छोड़ सकते हो, आप रिटर्न नहीं कर सकते हो. इवन अगर किसी की लाइफ भी स्टेक पे होती है ना, तब भी वो पर्सन हाफवे पहुंचने के बाद में तो उसको फाइनली जैसे तैसे स्ट्रगल करके, परेशानियों का सामना करके उसको कंप्लीट ही करता है, उसको रीच ही करता है टू दी टॉप. कभी भी वहां से पलट के वापस आने की वो सोचेगा भी नहीं. द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड. क्यों? क्योंकि वापस आने का पैसेज भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना हाफ वे के बाद आगे जाने का है. सो बेटर है ना कि जब डिफिकल्टी तो दोनों तरफ है और इतनी डिफिकल्टी से हम हाफ वे पहुंचे हैं, तो व्हाई टू रिटर्न बैक. तो जो डिफिकल्टीज हमें फेस करनी है उसको फेस करके हम we will move onwards, हम आगे ही बढ़ेंगे. And then when the summit is climbed, there is the exhilaration, and when the summit is climbed, there is, we can say, excitement all around, the joy of having done something. एक joy होता है कि हमने पता नहीं कुछ बहुत हटके कर दिया है. The sense of battle fought and won, एक sense आता है जिसमें ऐसा होता है कि हमने battle fight किए and battle हमने win किए. There is a feeling of victory and of happiness, एक feeling होती है victory की, winning की and happiness की, खुशी की. ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, और एक पीक को दूर से डिस्टेंस पे देख के आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. ऐसा लगता है मैं दूसरे ही वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ. एंड मेजर बोल रहे हैं कि मैं तो अपने अंदर एक चेंज को एक्सपीरियंस करता हूँ, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको मैं सिर्फ स्पिरिचुअल बोल सकता हूँ. बाई इट्स ब्यूटी, aloofness, mind, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. As Everest did, it is a challenge that is difficult to resist. Now he says, उस माउंटेन की ब्यूटी, उसकी अलूफनेस, उसकी पावर, उसकी रगेडनेस, जो डिफिकल्टीज ऑन द वे एनकाउंटर होती हैं, ये सब चीजें, ये जो पीक है ना, इट अट्रैक्ट्स मी एंड ड्रॉज मी टू इट. एंड एज सेम जैसा इस एवरेस्ट ने किया, इसने मुझे इतना अच्छे से अट्रैक्ट किया दैट आई वाज अट्रैक्टेड एंड आई डिसाइडेड टू क्लाइंब दिस समिट. एंड इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, और ये एक ऐसा चैलेंज होता है जिसको रेजिस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. Okay, so I hope till here everything is well explained and you have well understood it. So in today's class we will do it till this place, and in tomorrow's class we'll be doing the remaining part of the chapter. You go through it nicely. I hope you will be able to understand it. Okay, till then take care of yourself, stay home, stay safe and keep studying.